Friends, I am Ashish Barua, your friend Sayansh Barua's father, who is studying in grade 9 RCIS Rustamji, Thane. I came to know from Sayansh that some of the students are having little bit of doubt in geometry, especially the circle theorem. I got the info just at the last moment, so just 2 days are there. I'm preparing this presentation. Just go through the presentation and see whether it is of any relevance while covering the circle theorem. IGCSE 9th grade, here the geometry portion, circle theorem. What are the, first let us go through the content, then we will discuss one by one, and finally we will solve the numericals. In the circle theorem, first is your angle subtended at the center of a circle is twice the angle subtended at the circumference. Then angles subtended by an arc in the same segment of a circle are equal. I will explain it in details. Then is your cyclic quadrilateral, where we will be getting the opposite angles of a cyclic quadrilateral add up to 180 degree, which is also called the supplementary angles. Then angle in a semicircle is right angle. Next is tangent. Tangent to circles. The angle between a tangent and the radius drawn to the point of contact is 90 degree. From any point outside a circle, just two tangents to the circle may be drawn and they are of equal length. And finally, the alternate segment theorem. The angle between the tangent and its chord is equal to the angle in the alternate segment. So this content we are going to discuss in this presentation. So first is coming to the angle subtended at the center. What it means? First we will draw a circle. So this is a circle and this is the center. If we take out a part of the circumference, just like Lottie Choco Pie or some pie, we bite one portion and we take it out. So this is an arc. While we are cutting out a portion from the circle, there are two arcs. One is the minor arc, another one is the major arc. So this small one, the chota one, is the minor arc, and the bigger one, the bada one, is the major arc. So let's mark the arc as AB. What it means? The start of the arc is A and this end portion is B. So this arc, AB, is the small minor arc and the other one is the major arc. Up to this is clear? Then we will go to the second part. Second part is from this arc, we can subtend angles at the center. From A to the center and from B to the center. So this is angle subtended by the arc AB at the center. Next portion is from this arc we can subtend angles on the circumference. Again I am drawing the circle. This is AB arc. In first case, we are subtending the angle at the center. Now, from the arc, we will subtend angles on the circumference, yani the other part of the arc, which is the major arc. So from A, this portion, all these portions, all portions, any point, at any point we can subtend angle by the arc. So from A
we are drawing one line at the circumference of the major arc. Then from the point B. So this becomes the angle subtended at the circumference. Suppose we take another point this. So from this point we will draw a line to arc A and B. So this is again the angle subtended at the circumference by the arc AB. So we can draw as many angles as possible on the circumference. पहला वाला हो गया क्या? What has happened? The angle is subtending an angle. The arc is subtending an angle at the center. Then the same arc is subtending angles on the circumference. So two factors. Now what will be the relation between them? Means this angle and these angles. As per the theorem, what it says, the angle subtended at the center is twice the angle subtended at the circumference. That means ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा at the center तो ये 30 डिग्री होगा. Up to this is clear? And vice versa, अगर circumference में 30 डिग्री होगा एंगल का तो सेंटर पे 60 डिग्री होगा, उसका डबल होगा. Just the inverse. This is about the first part. And the second part is this arc, from the arc AB, we can draw, again I am just drawing fresh circle. Second part, this is the arc AB. From this arc AB, we can draw as many angles on the circumference. तो हम बहुत as many as possible angles we can subtend on the circumference. Which circumference? The major arc. ऐसा अगर होता है तो ये जितना भी angles होंगे उनके बीच में what relation will be there? Relation will be all the angles will be equal. क्यों? क्योंकि अगर हम सेंटर में ड्रॉ करेंगे तो ये अगर 60 डिग्री होगा सेंटर में तो सर्कमफरेंस में कितना होगा 30 डिग्री. ये वाला सर्कमफरेंस में कितना होगा 30 डिग्री एंड ये वाला सर्कमफरेंस में क्या होगा 30 डिग्री. दैट मींस द एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क in the same segment of a circle is all are equal. Up to this is clear? Then we are going to the next part is cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. So what are the two terms are there? One is cyclic, another one is quadrilateral. Quadrilateral आप सभी को पता है, means any figure having the four sides. Any area surrounded by four sides. It may be a square, it may be a rectangle, it may be a rhombus, it may be a parallelogram, it may be trapezium, anything. So ये हो गया एक A, B, C, D. It's a quadrilateral. ऐसा भी हो सकता है. ये भी एक है ABCD. This is also quadrilateral. ऐसा भी हो सकता है. This is also quadrilateral. And this is also quadrilateral. जो दो पार्ट है यहाँ पे एक है साइक्लिक दूसरा वाला है क्वाड्रिलेटरल. सो क्वाड्रिलेटरल द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ व्हाट इज साइक्लिक? साइक्लिक का मतलब क्वाड्रिलेटरल फोर साइड्स आर देयर, दैट बीइंग द केस फोर vertices are there. So if all the four vertices are lying on the circumference, that means यहाँ पे एक सर्कल होगा. One circle will be there and all the four vertices
lie on the circumference. A, B, C, D. All the four vertices are lying on the circle. In such a case, it is cyclic quadrilateral. The definition part is clear. एक है quadrilateral यानी जहां पे चार यानी फोर साइड्स होंगे तो फोर वर्टिसेस भी होंगे. वही quadrilateral कब cyclic quadrilateral होगा? When all the four vertices are on the circumference of a circle. In such a case, that quadrilateral will be termed as cyclic quadrilateral. यहाँ तक क्लियर है? If so, we are going to the next part. Theorem क्या बोलते हैं? The opposite angles in a cyclic quadrilateral add up to 180 degree. That means supplementary. So ABCD is a cyclic quadrilateral. तो यहाँ पे angle A and angle B are opposite angles. Angle B and angle D are opposite angles. ये जो opposite angle होगा add up to 180 degree. That means angle A plus angle C add up to 180 degree. And angle B and angle D will add up to 180 degree. Angle A plus कौन सा वाला एंगल? ऑपोजिट एंगल्स बी सी डी. कौन सा होगा आप बताओ? एंगल सी. करेक्ट. Angle A and angle C add up to 180 degree, which is also called supplementary. ये एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स हुआ. दूसरा पेयर कौन सा होगा? B and D. So angle B plus कौन सा एंगल? C? No. A? No. D? Angle D. These two will add up to 180. पहले क्या है? क्वाड्रिलेटरल. सेकंड क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी ऑल द फोर कॉर्नर्स ऑन द सर्कमफरेंस. अगर होता है इन सच ए केस, ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होगा दैट विल एड अप टू 180 डिग्री. फर्स्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट थ्योरम इज क्लियर. इफ सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट. एक सर्कल है. अभी सेमी सर्कल कब होगा? जब इस सर्कल को दो इक्वल पोर्शन में भाग करेंगे. When we will divide the circle into two parts, equal parts. That means that segment has to pass through the center. This is center C or O. तो ये जो सेमी सर्कल सर्कमफरेंस में एंगल सबटेंड करेगा. ये एंगल का वैल्यू कितना होगा? हाउ मच विल बी द वैल्यू? व्हाट विल बी द वैल्यू? एज पर द थ्योरम it is right angle, means 90 degree, correct? So it is 90 degree. Now the question is, why 90 degree? We will come to the first part of the theorem. वहां पे क्या बोला है? फर्स्ट थ्योरम क्या बोला? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफरेंस. यानी if we take a circle and one arc AB, ये AB पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो दिस इज AB सेगमेंट. ये सेगमेंट सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है एंड यही AB सर्कमफरेंस पे एंगल सबटेंड कर रहा है. दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफरेंस. इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन? थोड़ा सा सोच के बताओ. इस AB को कैसे हम डायमीटर बना सकते हैं? अगर हम डायमीटर बनाते हैं, if so, then what will be the angle at the center? So one more circle हम ड्रॉ करते हैं. यही AB
जो छोटा था, we assume that it is passing through the center A B. So center में जो करेगा it is, that means it is a straight line, correct? If it is a straight line, then straight line का एंगल कितना होता है? बोलो बोलो बोलो, tell me. It's 180 degree, correct? Straight line का एंगल कितना होता है? 180 degree, correct? Yes. So angle subtended by the arc AB or the segment AB at the center is 180 degree. Clear? अच्छा, अभी यही AB सर्कमफरेंस पे एक एंगल सबटेंड करेगा. ये एंगल कितना होगा? सेंटर में जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसका आधा होगा, करेक्ट? एग्री और नॉट? So angle subtended at the center is double the angle subtended on the circumference, or other way, angle subtended at the circumference is half the angle subtended at the center. In this case, AB, which is passing through the center of the circle, is a straight line. So this is 180 degree. If this is at the center is 180 degree, तो उसका आधा कितना होगा? How much it will be? बताओ. 90 degree. So the angle in a semicircle is a right angle. Semicircle यानी आधा, आधा बोले तो ये जो segment AB is passing through the center. Up to this is clear? If so, we are going to the next part. Next part में क्या है? Tangent. Tangents to a circle. अभी tangent क्या चीज है? Tangent बोले तो एक सर्कल होगा. अभी outside the circle, any point, एक ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, तो ये पॉइंट सर्कल का जो सर्कमफरेंस है एट वन पॉइंट में टच करेगा. अगर ये पॉइंट से हम अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक दिस, इन सच ए केस कटिंग द सर्कल, सो दिस line is cutting the circle at 2 points, A and B. If it is cutting here, then also 2 points, C and D. If it is cutting here, then E and F. But it means from any point outside the circle, if we cut the circle, most of the cases में क्या होगा? It will cut or the touch the circles, cut the circles at two different points. That being the case, only in two cases it will touch the circle once. कैसे होगा? ये हो गया एक सर्कल, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट से एक टच करेगा, कटिंग हो गया, थोड़ा सा ड्राइंग का डिफरेंस है. आप मानो कि ये सिर्फ एक पॉइंट में टच किया, फ्रॉम दिस से के. सिमिलरली यहां पर भी एक पॉइंट से कट करेगा, टच करेगा, से दिस इज बी. व्हेन वी ड्रॉ a line, straight line from outside the circle, and that line touches the circle at only one point. Do not like these cases जहां पे ये दो पॉइंट में कट कर रहा है, बट यहां पे क्या कर रहा है? एक पॉइंट पे टच कर रहा है. When a straight line drawn from outside the circle, not inside the circle, I repeat, बाहर से, from outside, and it touches the circle only at one point, then this line is termed as tangents. Clear? Just छू के जाएगा. This is called tangent. अभी tangent from any given point outside the circle. From any given point, we can draw only two tangents to a circle. दो ही tangent draw कर सकते हैं. From this point, again only two. Any point से बाहर से हम जब draw करेंगे तो दो ही tangent हम
ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट इज क्लियर। फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल हम क्या करेंगे, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस में एक पॉइंट में टच करेगा, नॉट टू पॉइंट्स, देन इट इज कॉल्ड ए टेंजेंट। पहला बात। दूसरा बात क्या है, फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, बाहर से, सर्कल के बाहर से only two tangents can be drawn on a given circle. अभी ये रिलेशंस क्या है, अभी हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, अभी पकड़ते हैं कि इस पॉइंट पे टेंजेंट ने टच किया, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड ये पॉइंट से यहाँ पे सेंटर, दिस इज ओ, ओ सेंटर से ये जो टच किया वहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्लियर। ये अगर रेडियस हो जाते हैं तो इस रेडियस एंड ये टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन यही होगा, इट इज एट 90 डिग्री। क्लियर। आई रिपीट, जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट टू ए सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेंटर से अगर हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करेगा, इन सच केस दोनों के बीच में जो एंगल होगा, कौन दोनों, एक है टेंजेंट, दूसरा वाला है रेडियस, ये रेडियस, ये टेंजेंट, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला क्या है कि फ्रॉम आउटसाइड ए पॉइंट ए ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, नॉट मोर देन टू, दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी सेंटर से कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। करेक्ट। ओके, अभी ये अभी एक, इसका एक लेंथ होगा एंड एसी का भी एक लेंथ होगा, दोनों के बीच का क्या रिलेशन होगा, अब बताओ, बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स AB is equal to AC. So ये हो गया आपका AB is equal to AC. That means both the two tangents are of equal length. अगर ये equal length होता है तो क्या फायदा है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये आपका सेंटर है O, यहाँ पे आपका एक टेंजेंट आया है और यहाँ पे एक टेंजेंट आया है, से दिस इज A, ये point of contact is B and this point of contact is C. So AB is equal to AC, equal length. और क्या है, from O, if we draw a radius at the point of contact, point of contact, what are the point of contacts, this is B point of contact and this is C point of contact, they are subtending 90 degree angles between. So here also 90 degree, here also 90 degree. Now what I will do, another interpretations, this is not mentioned here, but subsequently while solving the equations or the questions or the numericals, that is needed. What is that? If we draw B and C, if we join B and C, so ABC is what sort of triangle, it's an isosceles triangle. Clear or not? Is it ABC? ABC ये वाला आपका क्या isosceles triangle होगा? Is it going to be an isosceles triangle? If so, why? Because AB is equal to AC. Why? क्यों? Because the two tangents are of equal length. So this AB is equal to AC. That means it's an ABC is an isosceles triangle. If ABC is an isosceles triangle का क्या relation है? The two angles are of equal value. ये अगर 60 होगा तो ये भी 60 होगा. Clear? Why I'm drawing it here? Because while solving the questions, you need to draw the reference here. So यहाँ पे what are the things we got? अच्छा, one more thing is there, that is your just a second, alternate segment theorem. Alternate segment theorem, what it is telling,
the angle between a tangent and its chord is equal to the angle in the alternate segment. अभी आता है one more term, chord. क्या आया? chord. हमने पहले क्या डिस्कस किया? arc. Now we are discussing chord. क्या हो गया? So circle जो एक portion we have taken out AB. Do you remember at the time of discussing the angle subtended at the center is twice the angle subtended at the circumference? There we have taken an arc. What is arc? The portion on the circumference. यानी ये वाला सर्कल का जो पोर्शन है जो हमने लिया है, this is arc. And the straight line joining A and B is called chord. So, chord is the shortest distance between AB, clear? Because AB is passing through the circumference of the circle. So, it is bending and traveling a more distance. But the shortest distance, the straight line is the shortest distance, clear? If so, this chord and arc, what is the relation? The shortest distance between the two endpoints is called the chord of a circle. Now, what it is telling? The angle between a tangent and its chord is equal to the angle in the alternate segment. Now, ये point पे हमने एक chord draw, tangent draw किया. Say this is tangent K. ये tangent at point of contact is A and AB is the chord. So, the tangent and the chord is having an angle. Clear? The angle between the tangent and the chord. It has certain values. Now, the same chord AB can subtend. So, means angles on the alternate segment. What is alternate segment? This is the minor segment. So, alternate segment is the major segment, the other part. Other part में it is subtending an angle. ये A point भी C point भी हो सकता है, D भी हो सकता है, E भी हो सकता है, F भी हो सकता है, G भी हो सकता है. So many angles can be subtended by the chord AB or the arc AB at the alternate segment. That being the case, this angle and this angle are of equal value. So, once again, try to connect the dot. ये एक tangent है AK और AB is a chord. So, between AB and AK, there is an angle. And AB can subtend an angle on the other alternate segment. Thereby, one angle will be subtended. These two angles are of equal value. Clear? If so, we are going to the next part. For next part is the textbook part. So before going to the textbook part, what we will do, we will revise the part. हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे? आप देखो, एक रिविजन हो जाए. एक सर्कल होगा. सर्कल का एक पोर्शन है AB. ये AB को अगर सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आर्क बोला जाएगा. And if we draw a straight line between the two endpoints, then it is called a chord. Now this arc AB is subtending an angle at the center, and the same arc AB is subtending an angle on the alternate segment. So see, angle subtended at the center is double the angle subtended at the circumference. ये हो गया पहला part. दूसरा part क्या था? From the arc AB or from the chord AB, we can draw as many angles. We can subtend as many angles on the alternate segments C and D. In such a case, the relation between C and D क्या है? C and D के बीच में जो relation है, that is they are of equal value.
So as many angles we can subtend on the alternate segment, and each one will be of equal value. This is your second part. Next is साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या था, पहले क्वाड्रिलेटरल आएगा जहां पे 4 साइड्स रहेगा एंड 4 वर्टाइसेस रहेगा. 4 vertices में if all the 4 vertices are lying on the circle, then it will be called a quadrilateral cyclic quadrilateral. Clear? So cyclic quadrilateral has two pairs of opposite angles. Two pairs of opposite angles. So opposite angles का जो sum होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी सप्लीमेंट्री होगा. A plus C is equal to 180 degree, B plus D is equal to 180 degree. And angle in a semicircle is right angle. ये angle in a semicircle is a right angle किसका, कहां से हमने ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ किया यहां से, ये वाला फर्स्ट थ्योरम से. यही जो AB कॉर्ड है, अगर ये सेंटर के थ्रू से पास आउट करता है तो सेंटर में इट इज सबटेंडिंग 180 डिग्री एंड उसका आधा on the circumference. If it is 180 degree, then it is 90 degree. पक्का? Clear? This is just a revision part. Cyclic quadrilateral हो गया. Then the tangent. Tangent क्या है? एक सर्कल होगा, सर्कल से बाहर में, outside the circle will take any point. Any point. तो ये from this any point से T we can draw only two tangents. क्या tangents का होगा? It will touch only on at a point, one point, not more than one. This is one point of contact touch, that is A, and it is at B. From any point outside the circle we can draw two tangents and they are of equal length. So AT is equal to BT. And यहाँ पे one more thing क्या है कि ये रेडियस सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट मींस द टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एट दैट पॉइंट इफ वी ड्रॉ द रेडियस देन दिस एंगल इज 90 डिग्री. क्लियर? देन द लास्ट अच्छा लास्ट पार्ट इज जस्ट अ सेकंड is alternate segment theorem. Alternate segment theorem, once again I am repeating just for better understanding purpose. क्या है आपका, ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक टेंजेंट है, दिस इज T एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज A. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कॉर्ड होगा AB. सो AB एंड AT के बीच में एक एंगल होगा सर्टेन वैल्यू and EAB can subtend angles on the alternate segment, yani on the circumference. These two angles, ये यहाँ पे हो सकता है X, ये यहाँ पर भी हो सकता है Y, यहाँ पर भी हो सकता है Z. तो क्या हो जाएगा, एज मेनी एंगल्स एज पॉसिबल. लेकिन जो भी एंगल सबटेंड करेगा ऑन द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑल विल बी मींस इसका और इसका. सो दिस इज द थ्योरम पार्ट. अभी ये थ्योरम पार्ट सभी को क्लियर हो गया. इन सच ए केस वी आर गोइंग टू द क्वेश्चंस पार्ट. क्वेश्चंस पार्ट में ये आपका टेक्स्ट बुक में क्या बताया गया था, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफरेंस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है. ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है. These are 3 points on the circumference, A, B and C. 3 points on the circumference. So सेंटर से अगर B को टच करेंगे एंड सेंटर से अगर A को टच करेंगे, what will be termed as OB and OA? Are they radius? OB and OA, these two lines, are they radius? क्या बोलते हो? What is it? रेडियस ना. रेडियस होगा तो क्या होगा,
radius of a circle are always same value. So OB is equal to OA. Correct? OB अगर OA है तो ये अगर 50 है तो ये कितना होगा? अब बताओ. OB is equal to OA है और OA is equal to OB है, तो OAB ट्रायंगल OAB is an isosceles triangle. Isosceles triangle होगा तो एंगल B is equal to एंगल A. Correct? If angle B is equal to angle A in triangle OAB और ये अगर 50 है तो ये भी कितना होगा? एंगल A will also be 50. ये 50, ये 50. इन ट्रायंगल तीनों एंगल का सम कितना होता है? बताओ बताओ बताओ. OAB. B 50 है and these are O and OB are isosceles, means the radius of equal length. So A is also 50 degree. And in a triangle, sum of the triangles कितना होता है? It's 180 degree. Correct? So, that being the case, angle at the center कितना होगा? 80 degree. अभी तो तीनों का 180 degree होगा ना? Correct? Okay. So, angle at the center is 80 degree. So, ये जो एंगल है ये है 80 डिग्री. ये अगर 80 डिग्री है, ये कौन सा पार्ट का है? AB आर्क का है. और AB सेगमेंट का आर्क होगा तो ये वाला पार्ट होगा, ये होगा तो सेगमेंट का होगा. तो AB का जो AB एंगल सबटेंडिंग एट द सेंटर एंड एंगल सबटेंडिंग एट द सर्कमफरेंस, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? सेंटर का डबल होगा सर्कमफरेंस. क्लियर? तो ये अगर 80 है तो ये कितना होगा? 160 और 40. ऑन द सर्कमफरेंस कितना होगा? इज इट 40 और इज इट 160? क्योंकि दिस एंगल इज 80 तो इसका आधा होगा ना, एज पर द फॉर्मूला. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क दिस वन at the center is twice the angle subtended at the circumference. So it's half. So it is 40 degree. Clear? वही यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. This example is clear to you? Then we are going to the next example. Next examples के लिए क्या दिया हुआ है? Given BDC. एंगल BDC कौन सा है? पहले देखो कौन सा है? BDC यानी कौन सा आर्क है? BC आर्क. क्लियर? ये 62 डिग्री है. सो BC आर्क के ऊपर 62 डिग्री है और एक एंगल दिया हुआ है. कौन सा है? DCA. DCA इज 44 डिग्री. ये अगर 44 डिग्री है तो इसका आर्क कौन सा है? AD है, AB है, BC है और CD है. अब बताओ ये जो 44 डिग्री एंगल सबटेंड किया बाय व्हिच आर्क? आई एम जस्ट डिलीटिंग द फिगर एंड दिस ड्राइंग्स. तो नाउ द पिक्चर इज क्लियर. ये जो 44 डिग्री ऑन द सर्कमफरेंस एंगल सबटेंड किया बाय व्हिच आर्क? इज इट AD आर्क? इज इट AB आर्क? इज इट BC आर्क और इज इट CD आर्क? अब बताओ 44 डिग्री, डोंट यू थिंक दिस इज AD आर्क? सो AD आर्क ने यहाँ पे C एंगल किया 44 डिग्री. ये AD आर्क ने कौन सा एंगल और एक एंगल सबटेंड किया? कौन सा वाला है? इज इट? सो दिस टू विल बी इक्वल. क्लियर? नेक्स्ट, अगर ये BC आर्क D पॉइंट पे 62 डिग्री एंगल किया है तो ये BC आर्क ये पॉइंट पे भी एक एंगल क्रिएट किया है. क्लियर? क्या? ये वाला आर्क एक यहां पे आया और एक यहां पे आया. एग्री और नॉट ऑन आर्क BC?
कॉमन आर्क। सो ये अगर 62 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 62 होगा या नहीं, बस यही यहाँ पे हुआ है। These are examples given in the textbook. Now we'll come to, we'll just take out few questions. उस क्वेश्चंस में आपको कैसे पकड़ना है एग्जाम्पल्स को। से सपोज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट। तो आपका कौन कौन सा आर्क है पहले देखना पड़ेगा। एक आर्क ये है, ये आर्क कौन कौन सा एंगल सबटेंड करता है। ये आर्क यहाँ पे एक एंगल किया है एंड हियर इट इज सबटेंडिंग वन एंगल। क्लियर और नॉट। इस आर्क, ये एंगल एंड ये एंगल आर सेम, so if it is 27 then this is also 27, A is also 27. Clear or not? Next we will come into B. ये जो B एंगल which आर्क ने बनाया, ये वाला आर्क ने बनाया, ये वाला आर्क ने बनाया, ये वाला आर्क ने बनाया या ये वाला आर्क ने बनाया। अब बताओ ये जो B एंगल है कौन सा आर्क ने बनाया। Which arc has formed or subtended angle B on the circumference? If I say this arc, do you agree? यही तो है ना, देखो करेक्ट। इफ सो ये सेम आर्क और एक एंगल सबटेंड किया ना, ये वाला, तो ये आर्क और ये आर्क इसके ऊपर है ना। अगर सेम आर्क है तो बोथ विल बी इक्वल। जस्ट सपोज किसी स्टूडेंट का मीन्स और एक सिबलिंग है, यानी आइदर टू ब्रदर्स और वन ब्रदर वन सिस्टर और टू सिस्टर्स से। सो पेरेंट कॉमन होगा, फादर एंड मदर आर कॉमन। सो सेम फादर एंड मदर का दो किड्स, एक हो आप, दूसरा वाला है आपका ब्रदर या सिस्टर, both having same parents. Similarly यहाँ पे फादर कौन है, ये आर्क है। फादर या पेरेंट्स कौन है, ये आर्क है। इस पेरेंट का कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स किड्स आर देयर, एक ये किड और ये एक किड, तो दोनों किड्स का पेरेंट्स सेम है। डोंट यू थिंक सिमिलर? So both are equal. Similarly, ये अगर पेरेंट है यानी ये अगर आपका आर्क है, तो इनका दो बच्चे कौन है, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये, सेम पेरेंट है, बराबर, दे आर हैविंग द सेम पेरेंट्स। सो यहाँ पे क्या होगा, एज पर दिस सेम आर्क का दो जो एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफरेंस दे विल बी ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी पेरेंट सेम होगा तो दे विल बी द ब्रदर्स और सिस्टर्स। दैट बीइंग द केस हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या करना पड़ेगा, आपको फादर ढूंढना पड़ेगा, पेरेंट्स ढूंढना पड़ेगा। ये पेरेंट को लेना है या ये पेरेंट को लेना है या ये पेरेंट को लेना है या ये पेरेंट को लेना है, आपको करना है, करेक्ट। तो दैट बीइंग द केस यहाँ पे कौन कौन सा एंगल पूछा गया है, एंगल डी आपने पूछा है। एंगल डी का पेरेंट कौन सा है, यानी कौन सा आर्क है। डू यू एग्री दिस इज द पेरेंट और दिस इज द आर्क, एंगल डी का। इफ सो इसका दूसरा बच्चा कौन है, विच इज द अदर किड, दिस वन। एग्री, सेम किड, आई मीन सेम पेरेंट्स का दो किड्स, दे आर हैविंग द सेम पेरेंट्स, सो एज पर दिस बोथ आर मींस एज पर दिस सर्कल थ्योरम बोथ आर ऑफ इक्वल वैल्यू। अगर इक्वल वैल्यू होगा डी इज ऑल्सो 45 डिग्री, डू यू एग्री और नॉट, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट अभी कौन सा सी मांग रहा है, आपको सी मांग रहा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा सी किस आर्क के ऊपर है। सी इज बेस्ड ऑन व्हिच पर्टिकुलर आर्क, दिस इज आर्क, एग्री और नॉट। इफ सो इस आर्क का कौन कौन सा एंगल है,
एक सी है, दूसरा वाला बताओ बताओ बताओ, 20, एग्री? So both are same, so C is also same, equal to 20. Clear? और एक बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे आपको कॉमन कॉर्ड या कॉमन आर्क पकड़ना पड़ेगा, जस्ट लाइक द पेरेंट्स कॉर्ड। सो दैट बीइंग द केस, आपको कौन सा एंगल मांग रहा है? एंगल डी मांग रहा है, एंगल ई मांग रहा है, एंगल सी मांग रहा है। तो पहले हम एंगल सी को लेते हैं। एंगल सी को लेने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सी इसका आर्क कौन सा है। इस सी का आर्क कौन सा है? ये वाला है, ये होगा तो आर्क होगा, और ये होगा तो सेगमेंट होगा, सेम थिंग। सो ये अगर आर्क है, सबटेंडिंग एन एंगल एट द सेंटर इज सी, नॉट सेंटर ऑन द सर्कमफरेंस, देन कौन सा दूसरा वाला एंगल है? बताओ बताओ, इज इट 58, इज इट 41 और इज इट 30? जैसे बताओ, ये वाला सेगमेंट है, आर्क है, और ये सेगमेंट है। ये एक एंगल सबटेंड किया सी, और दूसरा वाला से एंगल कौन सा किया? दिस। दैट बीइंग द केस, दोनों का सेम पेरेंट है, यानी सेम आर्क है, सो दे आर ऑफ इक्वल वैल्यू। दैट बीइंग द केस, सी का वैल्यू कितना होगा? 58। सो इज इट, एग्री और नॉट? आप एग्री नहीं करोगे तो मैं आई विल स्पेंड मोर टाइम हियर। It's not one-to-one direct, just I am recording, so just I am pretending that you are clear up to this point. तो नेक्स्ट हमें डी निकालना है। आप बताओ डी का पेरेंट कौन है? Which one is the parent? Means in this case आर्क कौन सा है? Do you think this is that? ये आर्क अगर है, ये पेरेंट है, उनका दूसरा बच्चा कौन है? क्लियर? सो ये अगर डी है तो ये 41, बोथ आर इक्वल, एग्री? ये वाला पोर्शन पे, सो डी इज इक्वल टू 41। नेक्स्ट कौन सा निकालना है? ई निकालना है। सो ई निकालने के लिए आपको पेरेंट निकालना पड़ेगा। इस एंगल का जो सर्कमफरेंस में सबटेंड कर रहे हैं, उसका आर्क कौन सा है? ये आर्क है या सेगमेंट? इसका दूसरा एंगल कौन सा है? व्हिच वन इज द अदर एंगल? दिस वन। बोथ आर इक्वल, क्लियर और नॉट? सो ई इज ऑल्सो इक्वल टू 30। सो यहाँ पे मैजिक क्या है? मैजिक के लिए आपको आर्क पकड़ना पड़ेगा। उस आर्क का कौन कौन सा एंगल से एक बार आपने निकाल लिया, once you are thorough, then it is just like so easy, like this. Next is coming to the example 4. Example 4 में what are the things you are asked to do? Angle H, G and F. FGH, 3 angles. Okay. अभी एंगल F निकाला है, तो इसका आर्क कौन सा है? दिस वन है। It is also subtending 40 degree with another, so both are equal. Clear? So ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा, करेक्ट? क्लियर? नेक्स्ट H and G, same common arc, so both are equal. Clear or not? Now G का वैल्यू क्या है? F का वैल्यू है कितना? 40, एंड ये सर्कल है, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइंड आ रहा है, सेंटर है, सो ये 85 है, ये 40 है, 185 प्लस 40 is 125. तो ये ट्रायंगल पे जी कितना हो जाएगा? 180 minus 125 is 55. If it is 55, then this is also 55. So this
Example is clear? Now question number 5. I will not solve. I will just identify the common arc. ये एक आर्क है, इसका एंगल इज 25. ये एक आर्क है, इसका दो एंगल है, एक 80 और दूसरा वाला बी है. सो 80 इज बी. ये वाला एक आर्क है जिसका दो एंगल है, दिस एंड दिस. सो ए इज ऑल्सो 32 एंड दिस वे यू कैन फाइंड आउट. बी इज 80, A is 32 and C. C एंगल का आर्क कौन सा है? ये है. क्या C एंगल का जो ये आर्क है, ये आर्क एक तो एंगल यहां पे सबटेंड किया, दूसरा वाला तो किया ही नहीं. तो कैसे करेंगे? इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देना है. क्या ट्विस्ट? अब देखो, ये 80 डिग्री है, ये 32 है, ये 25 है, तो ये कितना हो गया? 60. तो यहां पे एक ट्रायंगल है. Sum of the three angles of a triangle is 180 degree. So ये प्लस ये माइनस 180 से जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज द वैल्यू. क्लियर और नॉट? नेक्स्ट इज 6. आपको वैसा ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है. क्लियर? Just for asking the questions. Question number 9. ये ऐसी है, सेंटर पे क्या किया एंड इसमें क्या किया, दोनों के बीच में रिलेशन किया एंड यू कैन सॉल्व इट आउट. क्लियर और नॉट? क्वेश्चन नंबर 10. ये सेंटर पे 80 डिग्री किया है, तो सरकमफरेंस में इसका आधा करेगा. सो डी कितना करेगा? हाउ मच इट इज? इसका आधा 44 हो गया. डी इज 44. नाउ सी के लिए थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है? व्हाट इज द ट्विस्ट? ए ओ बी, ये ट्रायंगल का ओ ए एंड ओ बी क्या है? रेडियस. रेडियस है तो बोथ आर इक्वल. If both are equal, then it is isosceles triangle. If it is isosceles triangle, then this angle is equal to this angle. Correct? That means C plus this angle will also be C. 2C plus 88 is equal to 180. Correct? C plus 88. Sorry, 88 is equal to 180. Clear? So 2C is equal to calculations part. I am not focusing on the calculations part, just addition and subtractions. So next में चलते हैं. नेक्स्ट में क्या है? यहां पे सेम देखो 11. I will be skipping 1 and 2. The difficult part I will be discussing here. So ये 11 ये सेंटर में किया और ये कहां पे किया? ऑन द सर्कमफरेंस. ये 98 है तो इसका आधा होगा ई. करेक्ट? 49. ई इज 49 आधा. अभी एफ कितना होगा? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एफ है तो दिस इज आल्सो एफ. सो एफ प्लस 98 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 2f plus 98 is equal to 180 degree and you solve it. हो गया? एफ भी निकल गया, ये भी निकल गया. सिमिलरली ये वाला, ये जी है. ये जी कौन सा सेगमेंट का है? एबी सेगमेंट का. कहां पे किया? सरकमफरेंस पे किया या सेंटर पे किया? ये सेंटर पे किया. तो सरकमफरेंस में उसका आधा होगा, या सरकमफरेंस में जो करेगा सेंटर में उसका डबल करेगा. ये 38 है तो इसका डबल होगा यहाँ पे जी. करेक्ट? 38 का डबल 76. करेक्ट? सो जी को मिल गया. अभी आपको एच निकालना है. एच के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो थोड़ा सा ट्विस्ट, हल्का सा ट्विस्ट है,
ट्विस्ट कुछ नहीं है, एक बार कर लोगे तो ऐसा। सो यहाँ पे what is happening, this is an isosceles triangle, this angle and this angle are equal, so this again, if this is h, this is also h plus g, जिसका वैल्यू है double 38 is 180 degree, then you can easily solve it out. Correct? Now say 16, कितना डेंजरस दिख रहा है फिगर? डर लग रहा है? लग रहा है क्या? डर नहीं। तो यहाँ पे एंगल ए बनाया, यहाँ पे एंगल एक्स बनाया, इसका कॉमन आर्क कौन सा है? ये वाला कॉमन आर्क है। सो एक्स इज इक्वल टू ए होगा या नहीं? नहीं होगा तो यू कैन आस्क मी, अगर होगा तो देन वी कैन गो फर्दर। सो एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, तो फायदा क्या हुआ? व्हाट इज द बेनिफिट? यहाँ पे देखो और एक ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर और नॉट? इफ दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल देन दिस एंगल ए है, तो ये एंगल भी ए होगा, और ये गिवन है 108, so a plus 108 is equal to 180 degree, so 2a is equal to something and a is equal to something, you can calculate. If you are getting a, then x is also you are getting solved. ये part, first part is हो गया, angle subtended at the center and angle subtended on the circumference. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपका कॉमन आर्क ढूंढना है, कौन सा कॉमन आर्क है उसके बेसिस पे आपको करना है। Okay, this is clear? Shall I move to the next point? थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं बिकॉज आपका परसों ही आपका एग्जाम है। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेट, साइक्लिक क्वाड्रिलेट क्या होगा? पहले ये क्वाड्रिलेट होगा, ये 4 साइड होगा, 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस, एंड ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस के ऊपर होगा। इफ दैट बीइंग द केस, फायदा क्या होगा? सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, a plus c is equal to 180 degree, b plus d is equal to 180 degree. क्लियर? दूसरा वाला क्या है? एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल यानी ये जो सेगमेंट है, एबी सेगमेंट है, ये सेंटर से जा रहा है, सो ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री आधा होगा। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर एंड एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफरेंस, आधा, हाफ। सो क्लियर? सो वी आर गोइंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट। पहले हम we are discussing the examples. क्या बोल रहा है? find a and x. इधर है ये a x, ये and this are opposite, so sum of the two will be 180 degree. That being the case, a plus 81 is equal to 180, so a is equal to 99. Simple calculations. Then 2x plus x, these are vertically opposite angles, means the opposite angles. So these two angles are sum क्या होगा? 180 degree होगा. So 2x plus x, 3x is equal to 180 degree, x is equal to 60. Clear? If any doubt, rewind and replay. Next is coming, find b. Find b बोल रहा है. This is b, this is 37. और ab क्या है? Passing through the center. Passing through the center, that means this is a right angle triangle, यानी 90 डिग्री। ये अगर 90 है, ये 37 है, so b plus this is equal to 180 degree. Correct? So b is equal to 43 degree. No, 53 degree. 90 na, 53 degree. 90 minus 37 is 53. Clear? So this is the example that we have discussed. Now we are coming to the questions. यहाँ पे questions, find the angles marked with a letter. क्या क्या letter दिया हुआ है? अभी question number 1, find b and c. b plus this angle 105 is equal to 180, क्योंकि opposite angle, sum of the opposite angle is 180 degree. So it is 75 degree. B is equal to 75 degree.
Yes or not? Next is your see A. A plus 86 is equal to 180 degree. Supplementary, na? So A is equal to 94 degree. Clear? Next, coming to the second part, B. Question number 2. 96 plus D, 180 degree. So D is equal to, you can find it out. यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट किया हुआ है. C plus this angle is equal to 180 degree. लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है. उसकी जगह पे इसका एक्सटेंशन दिया हुआ है. इतना ही छोटू सा ट्विस्ट किया हुआ है और कुछ नहीं. स्मॉल ट्विस्ट, दैट्स ऑल. हल्का सा गूगली. ये अगर 101 डिग्री है, दिस इज स्ट्रेट लाइन बोले तो 180 डिग्री. सो ये वाला एंगल कितना होगा? 79 डिग्री होगा या नहीं? 79 डिग्री. So C plus 79 is equal to 180 degree. So C is equal to 101 degree. Correct? Next, question number 3. 116 plus Z is equal to 180 degree. So Z निकल जाएगा. X plus this is equal to 180 degree. ये 92 है तो ये 180 minus 92 88 डिग्री. ये 88 डिग्री है तो ये कितना होगा? X plus 88 is equal to 180. So this is also equal to 92 degree. Now is your Y. ये Z निकल गया तो Y भी निकल जाएगा. Z अगर एक वैल्यू है, क्या है? 180 minus 160 64. तो Y कितना होगा? This is also, these two put together is 180 degree. So this is also 160. Clear or not? अभी आते हैं 4 नंबर पे. 4 नंबर पे क्या है? 3D plus D is equal to 180 degree. 2C plus C is equal to 180 degree and calculation. That's all. 5H. ये 106 है तो 72 आप आराम से कर सकते हो. ये 72 है तो ये कितना होगा? 106 72 होगा क्या? 180 minus 106 is 74. This is 74. ये अगर 74 है तो ये कितना होगा? 106 होगा. This angle is 106. अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? H कैसे निकालोगे? H के लिए यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए काम बनाया. This side and this side are equal. So this is an isosceles triangle. If this is an isosceles triangle, this angle and this angle are equal. So 106 plus H plus H. 2H plus 106 is equal to 180 degree. 180 minus 106. So 2H is equal to 74 degree divided by 2H is equal to 37. Clear? And in this way you can solve it. So next चलते हैं. सबसे खतरनाक कौन सा लगता है? अब बताओ. पहले रिवर्स से आते हैं 20. ठीक है? 20 में क्या मांगा है? दिस इज 50 डिग्री. सो ये 50 डिग्री है और तो OAB क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या नहीं होगा? बिकॉज O and OB आर रेडियस ऑफ द टू रेडी means plural of radius. So OB is equal to OA. So ये 50 होगा तो ये पूरा वाला एंगल भी 50 होगा. करेक्ट? ये 50 होगा, ये 50 होगा तो x कितना होगा? 80 डिग्री. x अगर 80 डिग्री है तो ये सेंटर एंगल सेंटर में 80 डिग्री किया है तो इसका पेरेंट कौन है? पेरेंट आर्क कौन है? ये वाला है. इसने सरकमफरेंस में क्या करा है? ये एंगल किया है तो ये कितना होगा? आधा होगा, 40 डिग्री. सो दिस इज 40 डिग्री हो गया आपका. नाउ ये अगर 40 डिग्री है तो आपको ये निकालना है. देन फाइनली Z निकालना है. अब बोलो इसका ट्विस्ट क्या है? ये एंगल C जो है ये 40 डिग्री है. अप टू दिस इज क्लियर. क्योंकि ये 50 है तो ये पूरा वाला 50 होगा. ये 50 है तो ये 180 minus 100
is 80 degree. ये अगर 80 है तो ये C वाला जो होगा एंगल C will be 40. This is clear? If so, how to find out this angle? Because पूरा वाला we know BAO we know is 50 degree. क्यों? It's an isosceles triangle. OAB is an isosceles triangle. और OA is equal to OB, the radius of the circle. अभी देखो क्या दिया है, this side and this side are equal. So this angle will be equal to this angle. Agree? Isosceles triangle कौन सा? ABC. Do you agree ABC is an isosceles triangle? Because BC is equal to AB. Given. ये दिया हुआ है. देखो बाबा. ये जो double dot. So this angle and this angle are equal. So both are 40. ये 40 है और पूरा वाला 50 है. तो अंदर वाला कितना होगा? छोटा वाला smaller. That means the angle Z is 10 degree. हो गया? इतना ही derivations. और कुछ करना है? ये कॉमन आर्क में कौन कौन सा एंगल है? 40 है एंड C है. So ये 40 है तो ये भी 40 होगा. क्लियर? इसमें 32 एंड ये वाला एंगल है. So that will also be 32 degree. अभी CAB is 32 degree. अभी ये 40 है तो पूरा वाला कितना होगा? 40 होगा. कैसे? OA and OB radius of the circle. So this OAB is an isosceles triangle. ये अगर 40 है तो पूरा वाला जो एंगल है ये 40 होगा. अभी हमें Z निकालना है. ये 40 है तो ये वाला भी 40 है और ये 32 है तो अंदर वाला ये वाला 32 है. सो ये Z कितना होगा? 8 डिग्री. 8 डिग्री नॉट 80. 8. Clear? In this way you can find it out. If any doubt is there you can just immediately contact me. Next is tangent. The angle between the tangent and the radius drawn to the point of contact is 90 degree. This is a tangent. Point of contact is B. So O center से हम B को draw करेंगे. It's a straight line and ये AC is a tangent. तो tangent के ये जो क्या होगा? OB is perpendicular to AC. OB is perpendicular to AC. So it's 90 degree. Second क्या बोल रहा है? From the point T we can draw only two tangents to the circle. One will be here, another will be there. Not more than that. Also not less than that. Two and only two. No other options. And both are equal. So TA is equal to TB. That being the case, AB अगर segment को join करेंगे तो TAB is an isosceles triangle. Clear? ये point को remember करो क्योंकि इसको हमें next use करना है. नेक्स्ट यूज करने के लिए हम नेक्स्ट में स्लाइड पे जाते हैं. अभी यहाँ पे एग्जांपल्स करते हैं. पहले एग्जांपल से चालू करते हैं. TA and TB are tangents to the circle and center is O. तो क्या बोल रहे हैं? गिवन ATB this is 50 degree. This is 50 degree. Find ABT ये वाला एंगल निकालने के लिए बोल रहा है. And OBA O किधर? OBA ये वाला. ठीक है? कौन सा वाला? ABT एंगल and OBA. OBT is 90 degree. इतना तो क्लियर है as per the formula. Correct? OBT पूरा the entire angle is 90 degree perpendicular to each other. That is why it is 90 degree. Now this angle we need to find it out. Which one? TBA. Now TA is equal to TB. If TA is equal to TB, then ATB is an isosceles triangle. If ATB is an isosceles triangle, so this angle and this angle are equal. Which one? TBA and TAB are equal.
ये अगर x है, if this is x, so this is also x. So x plus 50 is equal to 180 degree. So 2x is equal to 180 degree. 2x is equal to 180 degree minus 50. 180 minus 50. So 130 degree. So x is equal to 65 degree. That means TBA is 65 degree. ये अगर 65 degree है, if so, and the entire angle is 90 degree. So 90 minus 65 is the remaining part. Is your 25 degree. Clear? It is? If so, we are proceeding to the next part. Next part में, in question number 1 to 8, find the angle marked with a letter. Now, SE is a tangent, OB is the radius, and O to C is a straight line. This is A and this is 4A. What about angle OBC? Is it 90 degree? Is it 90 degree? If so, why? We'll go to the theorem part. Angle between the tangent and the radius drawn to the point of contact is 90 degree. So this is 90 degree. If this is 90 degree, then 4A plus 90 is equal to 180 degree. 4A plus 90 degree is equal to 180 degree. So 4A plus A is equal to 90 degree. So 5A is equal to 90 degree. So A is equal to 18 degree. Clear? Next is coming to this part. Question number 2. See, when you look at the figure for the first time, it seems very difficult. But if you bifurcate piece by piece, bit by bit, then you can easily decipher the inner conditions, the hidden conditions given. Now, what is this? AC is a tangent, OB is a radius. So, this angle OBA or angle OBC are 90 degree, correct? If so, this is 50 degree, this is 50, and angle OBC, angle OBC plus angle BOC plus angle OCB. We are talking about this triangle. Is equal to 180 degree. Now, OBC is 90 degree. BOC is 50 degree. So 140 degree. So OBC is OCB X will be equal to 40 degree. Correct? X निकल गया. Next. हमको निकालना है Y and Z. Do you think Y plus Z is equal to 90 degree? If so, why? Because OB is perpendicular to AC, the tangent. So, angle Y plus angle Z is equal to 90 degree. Now, in triangle BDO, what sort of triangle it is? B triangle BDO. By the way, since I am discussing the entire chapter, so the video may be a little bit of longer durations. You can speed up to 1.5x to match that, so that you can quickly cover the segment. In triangle BOD, OB is equal to OD, radius of the circle. If so, angle Y is equal to this angle ODB. Angle OBD is equal to angle ODB.
Then these three parts, this is also y, this is also y. Y plus 50, 180 degree, 2y plus 50 is equal to 180 degree. So 2y is equal to 130. So y is equal to 130 divided by 2. So 65 degree. So y is 65. If y is 65, y plus z is equal to 90 degree. So z is equal to 25 degree. Clear? And so on. Abhi, say suppose this one. Question number 6. P is the point of contact of the tangent PQ and R is the point of contact of the tangent RQ. Now, this angle is 40, this angle is 32. So, this is your 72 degree. Clear? This part is 72 degree. Now, this is isosceles triangle because QR is equal to PR. So, entire angle is again 72 degree. This is 72. This is also 72 because isosceles triangle. Which triangle? PQR. This bigger one. Okay. This is 72. This is 72. So 72 plus n is equal to 180 degree. 72 plus 72 plus n is equal to 180 degree. So 180 minus 144, n is 36 degree. Okay. Next, we are going to the next part. Next part may say question number 7. In question number 7, BED is an isosceles triangle. How? These two dot lines. These two lines are of sides are of equal length. It is given. ये 50 होगा तो m भी 50 होगा. ये m 50 है, ये 180 है. So k कितना हो जाएगा? K हो जाएगा आपका 50 degree. K is equal to 50 degree because all put together 180 degree. K you got, m you got. If this is m is 50 and this is 50, so P will be 50, 50, 100. 180 minus 100, P is 80 degree. Clear? Next, I am coming to the alternate segment theorem. 8 and 9, I am not discussing it here because it is becoming too lengthy. If you want, just below the video, you put a comment. I will just make immediate as fast as possible the reply and send it. Alternate segment theorem. What it says, the angle between a tangent and its chord is equal to the angle in the alternate segment. Now, AB is a tangent and BC is a chord. The straight line BC is a chord and on the circle part this is arc. Clear? BC is a chord. So angle between the BC and the tangent, this is having a value. So this chord is subtending two angles on the alternate segment, angle D and angle A. As per the theorem, both are equal. So this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle. This is about the alternate segment theorem. Now example, O is the center of a circle. O is the center of a circle. AB is a tangent. AB is a tangent to the circle. Angle BOC, this angle is equal to 114 degree. Find ABC. ABC. So in triangle OBC, OB is equal to OC. The radius are equal.
So this is an isosceles triangle. That being the case, this angle is equal to this angle. If this is x, this is also x. So 2x plus 114 is equal to 180 degree. In triangle BOC. 2x plus 114 is equal to 180 degree. So 180 minus 114, 66 degree is equal to 2x. So divided by 2, x is equal to 33 degree. So these two angles are 33 degree. What about this angle? Now OB is perpendicular to AB. So the entire is 90 degree. And this smaller part is 33 degree. So 90 minus 33 is 57 degree. That means this angle is 57 degree. Clear? Next, here, exercise 14, question number 1. So AB is a tangent, BC is a tangent. This is 110 degree. So this one is, inside one is 70 degree. This is 70 degree. And here these two sides are equal. So this angle is also 70 degree. Now, if this is 70 degree, now what the formula says? The angle between the tangent and the chord is equal to the angle subtended on the by the chord on the alternate segment. So this is also 70 degree. Clear? In this way, we can find it out. Say question number 5. This is a tangent. This is 72 degrees. So this is also 72 degrees. Correct? This is 72. This is also 72. Now, what it indicates? This arrow sign and this arrow sign, they are parallel. This line and this line are parallel. Why? This is mentioned. If this is parallel and this is the transverse line, what will happen? Or this is the transverse line, what will happen? This angle and this angle are equal. This is 72 and this is also 72. And this is also 72. Okay. So this is 72, this is also 72. Why this is 72? Because this is, as per the theorem, this angle is equal to this angle. And why this is also 72? Because these are two parallel lines and this is the transverse. That being the case, 72 plus 72 minus 180. 72 into 2 is 144. 180 minus 144 is 36 degree. So E is 36 degree. Clear or not? Now, say question number 8. What is this? AB is a tangent. AB is a tangent. This is angle H. And this AC chord is subtending an angle 88 degree with the center. Now, if this is the chord AC and this is the tangent, and if we draw a subtended angle on the alternate segment, this angle is equal to this angle. So H is equal to this. That means this is also H. Now, the same chord or same arc AC subtending one angle at the center and one angle on the circumference. In such a case, what will be the relation? The relation, if this is 48 degree, this is 44 degree. If this is 44 degree, this is also 44 degree H, and so on. Clear? So I'm not discussing everything because the video is becoming too lengthy. If you want any if you have any sort of doubts, just do write a comment below the video so that I will immediately come back to you. So
यहाँ पे मैजिक क्या है? फर्स्ट पार्ट का मैजिक, हमें what we need to find out? We need to find out the parent और the arc. पेरेंट का दो बच्चे कौन है? ये आर्क का दो दो एंगल्स कौन कौन सा है? ये आर्क का दो दो एंगल्स कौन कौन सा है? ये आर्क का दो दो एंगल्स कौन कौन सा है? And so on. This is the magic. Once you can spot this, easily you can get it. For further query, you revisit the video as much as possible so that the circle theorem becomes like this for you. Even if you are having the doubt, because I am trying my level best to make it as easy as possible. अभी टाइम शॉर्ट है बिकॉज 2 दिन के बाद आप लोगों का एग्जाम है, सो आई एम इन हरी टू मेक द वीडियो. Otherwise, I could have made the proper, much more better presentation so that it becomes और भी ज़्यादा easy. If so, so now time shortage is there. Just not today is your 28th March. 30th is your exam, so I'm in hurry little bit. I'm preparing this exclusively for those who are having little doubt about the circle theorem. तो दोबारा देख लीजिए सर्कल थ्योरम में क्या क्या है. 3-4 चीजें है सर्कल थ्योरम का. एक एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर एंड एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफरेंस. दूसरा वाला देयर विल बी एज मेनी सर्कमफरेंस एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफरेंस. रिलेशंस क्या है? नेक्स्ट इज योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दोनों क्या है? देन टेंजेंट का क्या है? टेंजेंट इफ सो इसका साथ जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे उसके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. देयर विल बी टू टेंजेंट्स एंड ऑफ इक्वल लेंथ. वो होगा तो क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. एंड वी हैव डिस्कस्ड द एग्जांपल्स. देन इज व्हाट वी से थ्योरम. हाउ वी आर यूटिलाइजिंग दीस इंफॉर्मेशंस टू सॉल्व द क्वेश्चंस. कहीं पर भी डाउट है दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, सो दैट इट बिकम्स क्लियर. सो अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ द एफर्ट आई एम पुटिंग इट for your clarification will be of great help. If so, do comment, do write your comments. Thank you and all the best wishes for your 30th exam, for all the 9th grade IGCSE maths. Thank you and bye bye.